Hi guys, my name is Korak Roy. Another Friday and Bollywood Now is back. इस बार की फिल्म राब्ता. Shiv and Saira, यानी कि सुशांत और कृति, they are drawn to each other like long lost lovers. Their love actually goes back centuries. और दोनों को अलग जिसने किया था पहली बार, वो वापस आ जाता है. एंड तब से हीरोइन, हीरो और विलेन के बीच भागा दौड़ी छुपन छुपाई चलती रहती है. कितनी रिफ्रेशिंग नई कहानी है ना? वैसे एंड में जीतता कौन है ये आपको पिक्चर देख के पता चलेगा. मैं नहीं बताऊंगा. मैं बताऊंगा उस सवाल का जवाब जो ऑलमोस्ट सारे लोगों के दिमाग में है. क्या ये फिल्म मगधीरा की कॉपी है? नहीं. नॉट अ कॉपी. मगधीरा अलग, राब्ता अलग. मैं दोनों देख चुका हूं. द ओनली सिमिलर थिंग इज द रीइंकार्नेशन थीम. पुनर्जन्म, अगला जन्म. इस फिल्म में गाइस हम लोज की बात पहले करेंगे. Here they are. The lead actors look very good and do an okay job, but that's about it. Sushant Singh Rajput is a fine actor. But Shiv जैसे self-indulgent character को likable बनाने के लिए a certain level of effortless charm was required. Something that Sushant fails to get right. The current day Shiv looks right out of the Ranveer Singh hyperactive school of acting, jumping around everywhere. And the flashback warrior just has Sushant making weird faces. Like he's smelling something. No impact whatsoever. Kriti tries, does much better than her previous films like Heropanti and Dilwale, but still not impactful enough. Jim Sarb, the guy made such a strong impact in Neerja, but totally wasted here. Unki Hindi dialogue delivery is painfully awkward, and he even fails to get the gravitas required to become a truly memorable baddie. Rajkumar Rao bhi, such a waste of a talent in this film. The only good thing about the 300-year-old character played by him is the makeup. Other than that, impact zero. The first half is not really bad, but it's like regular proceedings. In no way great cinema. One would think Jim Sarb के आने के बाद चीजें थोड़ी interesting होगी, but alas, nothing like that. Massive problem starts with the second half though. The flashback comes in where the three main characters are warriors in an era hundreds of years back. It is such a drag. Long and so pointless. It is arguably one of the worst flashbacks I've seen in a long time. मतलब flashback के दौरान ना ऑडियंस का हालत लिटरली ये था. The tribal warrior past is like right out of Game of Thrones. Influences galore. वहाँ Dothrakis, यहाँ Murakis. Even the opening credit sequence is like GOT, but in super slow-mo. References इतने ही भरती है फिल्म में that one of the last scenes is like a forced, literally forced throwback to Titanic. But even that, no saving grace. The climax is just way too convenient. The lead pair literally just get out of the climactic crisis like this. ऐसे. मतलब आप देखोगे और आपका रिएक्शन होगा, है? ऐसे कैसे यार? इतनी आसानी से? Like what is this? Last and a very big con, वो राब्ता गाना. क्यों? इतना कमाल का गाना था. एजेंट विनोद से निकला हुआ इकलौता अच्छा प्रोडक्ट. क्यों गाने की ले ली सर? और दीपिका को लाके क्या फायदा हुआ? मैं बताता हूं. कुछ नहीं. This song has literally added nothing to the film. Zilch. And now guys, time for the highs, जो to be honest, काफी कम है. Writer Siddharth and Garima and debut director Dinesh Vijan try. Efforts दिखते हैं. The sets, the costumes, the VFX, the makeup, all pretty top notch, particularly flashback scenes में. The movie is technically sound and looks great. बट एक क्लासिक लव स्टोरी बनाने के लिए ना पैशन की जरूरत होती है. कहानी में, किरदारों में, और राब्ता में वो जरा भी नहीं थी. Certain portions of the first half have been treated in a very Holly rom-com manner. It's filled with cute little walk and talks in a beautifully shot European city, aka the Before series, and those parts are quite nice to watch. For pluses guys, this is pretty much it. Sorry. So guys, Rabta is that technically and visually well-made film which lacks real soul, depth and passion. और एक ऐसी लव स्टोरी जो पिछले 800 साल से दबी हुई है, अगर उसमें भी रियल पैशन नहीं होगा तो कैसे बन पाएगी अच्छी? It's really one long drag of a film. And that's why guys, Bollywood Now goes with 3.5 for Rabta. So guys, अगर आपने फिल्म देखी है तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइए आपको कैसी लगी ये फिल्म और कैसा लगा हमारा ये रिव्यू. और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी और मेरी मुलाकात इसी तरह होती रहे. This is Korak Roy. Till next time.